Hi everyone, this is Brijesh Dalmia from Masterstroke. Good evening, and I hope all of you are keeping well. Another edition of Masterstroke, 6 o'clock evening program. And thank you so much for joining in large numbers. Today, I'm going to talk about how to manage your time better, how to become more effective in time management, mostly related to mutual fund distribution business. एक दो आइडिया पर्सनल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में भी हो सकता है कि मैं दूं, बट मोस्टली हाउ एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना टाइम कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली मैं 4-5 आइडियाज पे बात करूंगा, एंड इफ इट वर्क्स यू कैन सेव 1-2 घंटे तो आप दिन के आराम से बचा सकते हैं। द नंबर वन आइडिया आई वांट टू गिव यू हाउ टू सेव टाइम एंड बिकम मोर इफेक्टिव प्रोडक्टिव इज दिस: cut your meetings. Now you're thinking client meetings? No. Let me complete. Cut your non-client meetings is my number one advice to you. As a mutual fund distributor, you should make as many meetings, do as many meetings with existing clients, prospective clients. That is the heart and soul of this business. The rule is meet people you want to meet, not people who want to meet you. And apply this rule 80-20. So 80 to 90% of your meeting should be with people whom you want to meet, and you should honor only 10-20% of the meeting for people who request to meet with you. If you follow this rule, you will save at least 1 to 2 hours every single day. Learn to say no to meetings. किस तरह की meetings? AMC is important, and they have a target. Relationship managers have target to meet you with due respect, deep humility, accept it. But because they have a target doesn't mean that you have to oblige to meet them very often. You should have a fixed process of meeting AMC people unless it is very urgent, important, and you want to initiate the meeting. Once a quarter, once in 6 months, once a year is good enough. So if you are working with 10 AMCs and 15 AMCs are after you to get your time, and they will call you every month to set up a meeting, that is 15 meetings per month. I think 5 is more than enough. You can cut down 10 meetings. Cutting 10 meetings will result in at least 15 hours of saving, if not more. 15 hours means 2 working days a month you can save by cutting your meeting. Apart from AMC houses, we do so many meetings, we attend so many programs, events here and there on obligation basis because we are unable to say no, or just like that. Even if you cut 2-3 meetings like that, committee meetings and club meetings and things like that, you can cut down. So my number one advice to you is that cut down your non-client meetings. My second advice, and this is very critical, this is even long-term advice. If you ask me, I will give you 4 or 5 ideas. This is my best advice on time management. And you cannot even guess what I'm going to speak right now. For the next 20 years, if you want to save time, 4 hours every day, you need to do passive management of your AUM. You have to manage your business passively. Low turnover, low churning, lesser review, lesser transactions, lesser interactions with the clients. You have to move in a direction jahan every day you don't have to talk to the client, explain them, suggest them, churn the portfolio, sell different schemes, and it's like a crisis management every single day. ये अच्छी स्कीम आई है, यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल देते हैं, ये स्कीम अच्छी नहीं चल रही है, यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ एसटीपी चालू कर देते हैं, यहाँ एसडब्ल्यूपी चालू कर देते हैं, यहाँ एक स्कीम में एसआईपी बंद करके दूसरी स्कीम में एसआईपी चालू कर देते हैं, यहाँ रिटर्न कम आ रहा है, ऐसे निकल करके बड़ी इस स्कीम में चले जाते हैं जहां रिटर्न आएगा. All these things you have to cut down. How much? 90%. क्लाइंट को आज अभी इस वक्त जो बेस्ट एडवाइस है, सजेशन है, दे दीजिए.
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ध्यान दीजिए, पैसिव मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बिजनेस में जाइए। माय फेवरेट डायलॉग हियर इज द हीरो होंडा एड। 15 साल से मैं इस एड का गुणगान कर रहा हूं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के सामने। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। हीरो होंडा का एड है, आप लोग जानते होंगे। फिल इट, यस प्रशांत, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। यानी एयूएम को लेके आओ, बंद कर दो और भूल जाओ कि एयूएम है, उस पर कुछ करना है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ एक्शन लेना ही नहीं उसके ऊपर में। नो एडवाइस, द ओनली एडवाइस आपको देना है, चालू रखो, कंटिन्यू, नो चेंज। कम समय लगता है, ज्यादा माइलेज मिलता है। इट्स लाइक व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, आप बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर लगा रहे हैं, फ्यूल ज्यादा कंजम्पशन होता है, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलना है, बस चलते रहो, माइलेज ज्यादा आएगा, एफर्ट भी कम लगेगा, हाथ पांव का मूवमेंट भी कम होगा, आराम से आप एंजॉय करके राइड ले सकोगे। म्यूचुअल फंड में भी यही करना है। ये जो लेन चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है ना, ये एएमसी को छोड़ के इसमें करेंगे, आज एचडीएफसी नहीं बेचेंगे, परफॉर्मेंस खराब है, आईसीआईसीआई में डालो, कल आईसीआईसीआई छोड़ करके एक्सिस में डालो, आज एक नई एएमसी आई है, इसमें ट्राई करेंगे, अभी मेरे अच्छा चल रहा है, अभी इन्वेस्टर को पैसा देते हैं, अभी इस रिलेशनशिप मैनेजर को पैसा देते हैं, अभी इस क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत हो गया, प्रॉफिट बुक करके इधर ले आते हैं, इसका कम प्रॉफिट आ रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट डू इट एंड यू शुड नॉट डू इट, बट कट डाउन बाय 90%. How many of you agree with this suggestion that I'm giving you? And if you do this, you can enjoy your wealth. Passive management of AUM. The commission that you will get and the business, one day आपका 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का AUM होगा और बड़े पैसे बनेंगे आपके, लेकिन समय नहीं होगा आपके पास में एंजॉय करने के लिए। सुबह से शाम तक उस समय भी आप लगे रहेंगे, और ये टेंडेंसी और ये हैबिट की बात होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल होगा। अगर आज से आप ये हैबिट नहीं बनाएंगे ना, तो बाद में भी आपको मुश्किल होगा, बिकॉज आपके डीएनए में आ जाएगा, ज्यादा रिटर्न देना है, ज्यादा एफर्ट करना है, ज्यादा चेंजेस करना है, क्लाइंट को कन्विंस करना है। अभी से पैसिव हो जाओ, और मैं आपको 2-3 फॉर्मेट देने वाला हूँ कि कैसे आप क्या किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट को। सुरेश बरुआ जी, बुरा जी जब बोल रहे हैं एग्री बट ऑल्सो डिसएग्री, आई फुल्ली एग्री विथ यू on whatever you are disagreeing with you, and you have raised your hand and I will give you a chance to speak. So passive management of AUM is extremely critical to grow your business, because दोस्तों जिस दिन आपका 500 करोड़ 1000 करोड़ का AUM हो जाएगा, 200 फैमिली को डील करेंगे ना, इट इज इम्पॉसिबल टू सी एवरी फोलियो, एवरी स्कीम, कहाँ अच्छा चल रहा है, कहाँ बुरा चल रहा है, कैसे चेंज करें, टैक्स इंपैक्ट आएगा, एग्जिट लोड इंपैक्ट आएगा, ट्रांजेक्शन एफर्ट लगेगा, कम्युनिकेशन, बहुत एफर्ट है ये। सो go for passive management of AUM. Second advice. The third advice, nothing new. Every day I speak about this, delegate. Delegate. In the morning, I was having insights on investor behavior. Anyone of you joining the 4th batch, please raise your hand, or please write in the chat box. We have 29 members there. In that, again, somebody asked me, when should I delegate my work? When should I hire people? And I said, now, today, right now. If you have taken ARN code, the best time to hire is now. And if you don't have money, break your FD and hire now. If you don't have FD, take a loan from your father, brother, sister, uncle, relative, friend, 2 lakh, 3 lakh rupees, and hire now. If you don't get an loan, don't start your SIP. Whatever income you are earning, don't invest, don't save, hire a person now. This is my advice to you. If you take my advice, your business growth will triple in the next 1 year, 2 years, 3 years, whatever you will achieve without people. Then I got a question that in today's technological world, should I hire people? My answer is yes, because technology खुद से run नहीं होती. You need someone to operate the technology. Transaction करना है, account statement भेजना है, reconciliation मिलाना है, KYC करना है, bugs fixing करनी है. You need people. So even with 100% online business, you should have one person who will assist you take care of your business other than client meeting and relationship with the client. Delegate. Then the question came that, okay, I don't want to hire right now. I don't want to take a loan. I don't want to break my FD. Then what?
then my answer is that the day you reach 50,000 rupees of gross income, trail income in the bank, hire a person. 1 lakh, 2%. 1 lakh 50,000, 3%. 2 lakh, 4%. Like that. Invest in your business. हम लोग कितना ज्ञान देते हैं ना फेसबुक पे और दूसरी जगह लोगों को कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं? Fourth advice, buy the best software, mutual fund software. Don't buy 5,000, 6,000, 7,000 rupees software. Buy 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,000, whatever best software, mutual fund software. Which one? Red Vision, Investwell, Mint. So there are a few more, but I will restrict myself to Red Vision and Investwell. They are the best. They're the most expensive, but the best. I want to tell you, if you have AUM of less than 8 crores, Investwell offers Masterstroke members 8,000 rupees to begin with. Their charges are 25,000, but you can get Investwell software at 8,000 rupees. India's best software. I personally use it. Red Vision is also good. You can try that also. But I think most people like Investwell and Mint also. We don't get any commission. We don't have any commercial relationship with Investwell. So if you buy them, we don't get any commission. I'm just recommending Investwell, the Mint version. 8,000 rupees you will get. So invest your money in the best software so that you can save time, because there are less errors. If you have to spend 5-10,000 rupees more to get the best software, जहां आपके दिन के 10 मिनट बचते हो, because to solve the errors and issues and follow-ups, it is worth your time. This is the fourth advice. The fifth advice. Do not do long review with the client as much as possible. Do short reviews with the client. And I will tell you how. I will show you some samples also. What I mean by this. Client का portfolio manage कर रहे हैं, life insurance है, health insurance है, mutual fund AUM है, X है, Y है, Z है, NPS है, gold है. 2 घंटे की रिव्यू नहीं करनी है क्लाइंट के सामने. जब आप क्लाइंट के सामने मीटिंग करेंगे उस समय तो 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा जो लगना सो लगेगा. But other than client meeting, you should do review of the client portfolio in 5 to 10 minutes. And you should send a review to the client in 2 minutes. Save your time. Don't write long email messages or WhatsApp messages of 1 page, 2 page to review the portfolio of the client. Save your time. So if you have 150 families or 200 families और साल में आप 4 बार उनको रिव्यू करते हैं, 2 बार रिव्यू करते हैं, तो 800 रिव्यू हो जाते हैं. 800 रिव्यू में अगर आपने हर रिव्यू में 10 मिनट टाइम बचा लिया मेरे इस एडवाइस से, तो 8,000 मिनट होते हैं. 8,000 मिनट कितने हुए? 1,100 hours, 125 hours. Yani half an hour every day you can save. Big time saving. How you should share reviews, I will share. Almost 50 working days you are writing. Absolutely huge. And this is also big advice. I will share my screen. I will show you how you can review client message. This is some of the format you should think about. This is how I do this. These are actual client reviews I am showing you without giving the name of the client. I had a look at the portfolio. Nothing to be done for now. Portfolio is doing very well. Gains of 7 lakh on outstanding portfolio with current returns of over 19% CAGR. Credit goes to the markets which are rallying. Really a difficult call till when it will keep on rising. But with SIPs continuing, my fear is less. And I would like to continue for now the investment as it is. Let me know if you have any queries. This is a real review which took 2 minutes to write. No email required. You can send it on email also. Just send the WhatsApp to the client. Client को क्या फीलिंग आती है? मैं हूं ना, आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूं. आप अपने बिजनेस में, अपने धंधे में लगे रहो, अपनी फैमिली का टेक केयर करो, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूं. ये रिव्यू आप साल में 6 बार भेज सकते हैं उसको. ओके, पावरफुल रिव्यू. कोई जरूरत नहीं है बहुत लंबे लंबे पोर्टफोलियो भेजने की. पोर्टफोलियो जा रहा है अपना शेड्यूल, पोर्टफोलियो मैनेजर से शेड्यूल होकर के जा रहा है, ईमेल पे जा रहा है, बंदा भेज रहा है. आपको पोर्टफोलियो के साथ में रिव्यू भेजने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, a quick periodical review. Again, this is what I have sent to one of my clients. Value of portfolio 1.64 crores, gains 28 lakhs, ROI 19% CAGR, debt 14%, and equity is 60%. Portfolio doing very well. Well, markets are also good. Consider increasing SIPs. This is I called short reviews.
Do you like this or not? Please write me in the chat box. How many of you like this? I need 5, 10 at least to be with me on this. Short review. People love it. I do it for the last 15 years. I don't do very formal reviews with the client. Very short, small reviews like this. And the final, I will show you 3 templates. The third template. Hi, Mr. XYZ. Hope you are doing well. A quick update on the portfolio. Value 3.29 lakhs, returns 22% compounded annually. Everything is into equity-oriented mutual funds. Markets have been rocking. Hope you are comfortable with 100% equity portfolio, though you have always been comfortable and insist on being into equity only. Re-emphasizing that, it is your call to stay in equity. And I'm again re-emphasizing to the client that if you want to change, let me know. SIPs will help. Let me know if you would like to discuss on the portfolio and the way forward. What do you think about this? Very nice, good, very nice, great idea, super. So this is how you save time in our business. लंबी बात नहीं करनी है, छोटी बात मैसेज करते रहो क्लाइंट। क्लाइंट को जब आप लगातार मैसेज करते रहते हैं ना, इसको कहते हैं नज। नज का मतलब होता है कि क्लाइंट को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं हूं। नज एक किताब है, और नज जो इकोनॉमिस्ट ने जो किताब लिखी है उसको नोबेल प्राइज भी मिला है, और वो अपने किताब में लिखते हैं छोटा छोटा नज कैसे बड़ा बड़ा रिजल्ट हासिल करता है। जैसे जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और फाइनल बिल काउंटर पे खड़े रहते हैं, 15 मिनट का वेटिंग होता है, वहां पे छोटे छोटे चॉकलेट्स और छोटे छोटे एक्सेसरीज होते हैं, उसको कहते हैं नज। बार बार समय नजर जाएगी तो आप कुछ उठा लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे और आपका खर्चा हो जाएगा और शॉपिंग मॉल को प्रॉफिट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड नज। नज का मतलब होता है, एंड मार्केटिंग का मतलब होता है कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स, न्यू बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स शॉपिंग मॉल में आप देखेंगे। उसका वजह ये है, when ladies get pregnant and they gain a lot of weight, and when they deliver the baby, the next thing on their agenda is to come back in shape and beautify themselves again. And so when they are buying product for their kids and the newborn baby, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, and the product surrounding that area has a lot of beauty products which suggest that you can now improve upon yourself, they end up buying it. This is called nudge. So when you send this small message and reportings to the client, this is called nudge, and the client will feel somebody is looking at the portfolio. धीरे धीरे उसकी habit क्या हो जाती है, वो दिमाग लगाना छोड़ देता है क्लाइंट, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है, कुछ देखने का जरूरत नहीं है, somebody else is looking at it, and it becomes passive management of AUM. It becomes it saves your time and you win big time. Last but not the least point, if you are a one-man army, you should focus 90% only on mutual funds. If you have people who help you in the business, then you should focus 70% on mutual funds, and 30% of your time can go into sovereign gold bond, NPS, general insurance, life insurance, term insurance, bonds, X, Y, Z. Because if you are one-man army, if you give more time to other financial products, servicing will become a big challenge for you. I strongly suggest you to have 70% time in mutual funds and 30% in other products to retain the client. But if you are one-man army, don't focus on other financial products. Don't push the client for other financial products. Inform them. Don't market it very aggressively because the servicing will be very aggressive. Okay. So stay with mutual fund 90%. But if you have 1 or 2% who are helping you, then you should have other financial products 30% also. Okay. These are my 6 pointers today. I'll give you a short summary I made here for those who joined in late. Cut non-client meetings, passive management of AUM, delegate, do short client reviews, and if you are one-man army, focus 90% on mutual funds. This is what I have to say today. Thank you so much for attending this webinar, and let me know how was it. Thank you so much.